Good evening, everyone. Shri Gurubhyo Namaha. In yesterday's session, we had discussed about Garavisha, and we had concluded the session with an open question. In yesterday's session, we had discussed about Garavisha, and we had concluded the session with an open question that why Garavisha, why in the context of Garavisha, in terms of Lakshanas, more systemic manifestations has been mentioned rather dermatological manifestations. But if we see in the context of other Vishas, we see more dermatological manifestations. So, is anyone ready with the answer to the question? Kindly send your answers in the comments. The question was why there is more systemic manifestations in Garavisha but less dermatological manifestations, whether there is a chance of dermatological manifestations or whether it is restricted to only systemic. Okay. In my vision, I feel that Garavisha is a combination of either Vishajadravya or it could be Vishadravya and a Nirvishadravya, or a combination of totally a Nirvishadravya. Here we don't know what is the composition, and based on that Garavisha Prayogas during those days, they might have mentioned and that combination used during those days must have produced predominantly systemic manifestations rather dermatological manifestations. Yes, Shubhamji, you are right. There is no restrictions that this Garavisha shouldn't produce any dermatological manifestation. Is there any doubt regarding the topic, last topic? If yes, please send in comments. If there is no doubt, we shall proceed with the today's topic. Yes, there is definitely there is a chance of Gara producing dermatological manifestations. It could be severe, it could be acute, or it is I think if it produces, it could be because of contact toxicity. Because of that it could produce, I think. Yeah. Then yes. Then we shall proceed with today's topic. Today I shall be dealing with the contrary aspect of this. It's like a twin brother to this Garavisha, that is Dushivisha. Most of the times either of the topic are regularly asked in the examinations. Now, Dushivisha, in the concept of Dushivisha, we have to keep three things in mind. First is strength of Visha. Second thing is chronicity. Third is the manifestations. Now, can anyone tell me that Dushivisha, is Dushivisha actually a Visha, or it is a resultant of a Visha which is ingested? Is it Visha as such, whether Dushivisha is a Visha, or it is a resultant of ingestion of some other Visha? Can anyone tell me?
Okay, we'll leave it to the end of the session. Let's see if someone is answering this question. Okay, Doshi Visha, if we see the term as such, the term itself gives the meaning Dushi, that causes the Dushana, hence it is called as Dushi Visha. If we see the definition according to Shabdakalpadruma, Shabdakalpadruma is an Ayurvedic dictionary which also contains references from different texts, also from Samhitas and different authors. Now here it has been mentioned as Dushayati iti Visham, the Visha which causes Dushana, hence it's known as Dushi Visha. According to Rajavallabha, here he mentions it as Swabhavato Gunahina Visham. By Swabhava, by nature itself, it is Guna Viprahina. It doesn't have Guna, or it is less potency. We can understand that the Visha having less potency is termed as Dushi Visha. This is a reference from Shabdakalpadruma. Now, other references on this topic, major references are from Sushruta and Ashtanga Sangraha as well as Hridaya. In Sushruta, Sushruta Kalpasthana, second chapter, you will find the references of Dushi Visha and reference from Ashtanga Sangraha. It is from Ashtanga Sangraha, Uttara Tantra, 40th chapter. Ashtanga Hridaya, it is again Uttara Tantra, 35th chapter, and Charaka Chikitsa, 23rd chapter. In all these references, all these references I have mentioned, you will get the different aspects of this concept of Dushi Visha. Next, coming to the definition of Dushi Visha. The paribhasha of Dushi Visha according to the Samhitas. Here it has been mentioned that Yat Sthavaram, Sthavara Visha, Jangamam, Jangama Visha, Kritrimam. Here Kritrima, it can be Gara also. Va Dehad Ashesham, Yad Anirgatam Tat. The Visha which is either Sthavara, Jangama or Kritrima, which has not been removed from the body in toto, Yad Anirgatam Tad Jeeranam. Jeeranam, for Jeerana, Ashtanga Hridaya Tikakara has mentioned as Puranam, that is which is old. Jeeranam, whereas Sushruta Tikakara Dalhana mentions it as Dasha Gunair, that is Hita, that the Visha having less potency is Jeerana. Vishadnaushadhibhir Hatamba. The Visha, Vishaja condition, when you treat the Vishaja condition, but still the Visha is not taken out of the body in toto, it remains that condition. Davagni Vatatapa Shoshitamba. It undergoes processes by Davagni, Vata, Atapa, etc. Swabhavato va Guna Viprahinam. By Swabhava itself, the Visha is having less potency. For example, you can take as Kupilu. Kupilu is a very strong neurotoxic. If you take a Kupilu and expect it to have 100%, but the action is delivered 50%, then that type of Kupilu is said to have reduced potency. So, Swabhavato va Guna Viprahinam Visham hi Dushi Vishatam Upaiti. Such Visha is called as Dushi Visha. This is a reference from Sushruta Kalpa, second chapter. Here there is no much elaboration and tekas regarding other aspects. Okay. Next, coming to another aspect, another explanation of the definition of this. They mentioned that Dushitam Desha Kalanna Divaswapnair Abhikshnashaha. Now there is small amount of Visha in the body, and that on repeated opportunities, like repeated factors causing aggravation of that small amount of Visha, what happens here? They have mentioned Dushitam Desha. Desha
The Dallana mentions Desha as Anupa and Prabhutanila, windy regions, Shita, the cool areas. If Desha is such, that is Anupa, Prabhutanila or Shita. Kala is Shita Anila Durdineshu, windy days, cool when the atmospheric weather, when the weather is too cool, maybe Hemanta or Shishiratu. Durdina, cloudy weather, in such conditions. And Anna, here they have mentioned examples as Suran, Tila, Kulathadi. Apatya Ahara Sevana, and here the Tikakara mentions more than Apatya Ahara Sevana. Apatya Vihara has got more effect on this Doshi Visha, that is Apatya Vihara like Vyavaya, Vyayama and Krodhadi. If this Apatya Sevana is done and this happens repeatedly, Abhikshnashaha, Punah, if this happens Punah, what it does? Yasman Dushayate Dhatum. When this small amount of Visha in your body gets exposed to all these conditions, it does the vitiation of Dhatus. Yasman Dushayate Dhatum, Tasman Dushi Visham. As it does Dushana of Dhatus, it is called as Dushi Visha. So, now this thing has been explained. Sushruta also mentions aggravating factors separately as Kopamcha Shitanila Durdineshu. It gets aggravated in Shita, Anila and Durdin. Same thing has been mentioned in the last in the Tika for Kala, that is in cold, windy as well as in cloudy weather. In this condition, this Dushi Visha gets aggravated. Okay, the similar thing has been explained by Ashtanga Sangrahakara as well as Ashtanga Hridaya. They mention it as Pragvata Jirna Shitabhra Divaswapna Ahitashanehi. Here they have mentioned the Apatya Ahara and Vihara also in the shloka itself. Dushtam Dushayate Dhatu Dushi Tatto Dushi Visham Smritam. So here what Sushruta has mentioned, some factors in the Tikakara has mentioned Desha Kaladi factors. When the we are discussing here with here we are discussing Dushi Visha. Dushi Visha is small amount of less potent Visha which is present in your body. When it gets exposed, जब ये कुछ कंडीशंस में एक्सपोज होता है, जैसे कि देश यानी अनुपदेश, प्रभुतानिल जहाँ पे ज़्यादा हवा चलती हो ऐसे देश, या दुर्दिन किसको कहते हैं हम? जब मेघाच्छादित होता है, ज़्यादा क्लाउडी होता है एटमॉस्फेयर, उसको दुर्दिन कहते हैं. ऐसे कंडीशन में जब ये विषय एक्सपोज होता है तो ये क्या करता है? बाकी सप्त धातुस और दोषास को विषिएट करता है, उसको दूषण करता है, इसीलिए इसको दूषी विषय कहते हैं. नोट्स कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स दे सकें. तो हम यहाँ दूषी विषय की परिभाषा जो है उसको दो तरह से एनालाइज कर रहे हैं. एक है कि दूषी विषय कैसे बनता है देह में, और दूसरा है कि कैसे वो दूषण करता है बॉडी को. तो हम ये दोनों तरह के डेफिनेशंस को देख चुके हैं. अभी नेक्स्ट कमिंग पॉइंट इज अव्यक्तावस्था. व्हेन दिस प्रेजेंस विद साइंस एंड सिम्टम्स इन द बॉडी, ये कब बॉडी अपने शरीर में लक्षण को दिखाता है? तो it has been explained as वीर्याल्प भावाद यद अविभाव्यमेतत् कफावृतम वर्षगणानुबंधी. Because it is having very less potency, so it remains avibhavya. Avibhavya is mentioned as alaksha. It remains silent in your body. ये जो कि
बहुत कम, इसकी शक्ति बहुत कम होती है, तो ये इमीडिएटली लक्षण नहीं दिखाता है। ये थोड़ा टाइम लेता है। जब इसको अनुकूल अवस्थाएं मिलती हैं, जैसे कि शीत दिन मिल जाता है या दुर्दिन मिल जाता है या अपथ्य सेवन करते हैं, जो एक व्यक्ति जिसमें ये दूषी विषय है वो अपथ्य सेवन, जैसे ज़्यादा कुलत्थ खाता है, सुरा खाता है, या फिर व्यवाय करता है, ज़्यादा व्यायाम करता है, या फिर वह क्या बोल क्रोध आदि मानसिक जो भी पथ्य बताया है वो फॉलो करता है। जब ये सब करता है तो उसमें ये दूषी विषय बार बार ये चीज़ें करने से वो प्रकोपित होता है और ये बाकी दोष और धातु को दूषण करता है। इट डज द विशेषण ऑफ दोष एंड धातुस एंड देन लीड्स टू प्रेजेंटेशंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स व्हेन इट गेट्स आवरण बाय कफ। तो इसमें एक पॉइंट बताया गया है, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, कि वर्ष गणानुबंधी टर्म को आप जब देखेंगे तो लगेगा, इफ यू सी द टर्म यू विल फील इट इज फॉर जस्ट अ ईयर, it might be for an year, but Tikakaras have mentioned, Dallana has mentioned, if this visha stays in your body for a long period, if it's very chronic, then it is aneka samvatsara sthaitvat. This varsha gananubandhi is not just one varsha, it is aneka varsha, it may be many. Based on the rogi bala, the person may sustain it for longer time. जैसे वर्ष गणानुबंधी हम वो टर्म देखते हैं तो उसमें हमें लगेगा कि 1 साल का होगा ये, पर टीकाकार बोलते हैं कि रोगी बल की अवस्था पे इट माइट स्टे, वो आपके शरीर में बहुत टाइम तक रह सकता है। और अष्टांग हृदयकार से द सेम थिंग, वर्ष गणानुबंधित्व हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोथ अष्टांग संग्रह एज वेल एज अष्टांग हृदयकार। अष्टांग संग्रह कार्य और हृदयकार दोनों जो है इसी बात को स्ट्रेस करते हैं कि अल्प वीरता होने से वो शांत रहता है एटलीस्ट फॉर ए ईयर, 1 साल तक। उसके बाद जब कफाव्रता होता है, कफावर्ण ज़्यादा होना स्टार्ट होता है, तो वो प्रकोपित होता है और लक्षण दिखाना शुरू करता है। नेक्स्ट, इसका पूर्व रूप क्या है? पूर्व रूप क्या होता है? एक रोग या कंडीशन के पहले आने से, पूरे मैनिफेस्ट होने से पहले कुछ लक्षण जो दिखाते हैं उसको हम पूर्व रूप कहते हैं। इट इज स्टेज बिफोर द एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिसीज। सो हियर पूर्व रूप क्या बताया गया है? निद्रा, गुरुत्वं च, विजृंभणं च, विश्लेष, हर्षावथ, अंगमर्दः। ये रेफरेंस, this reference is from Sushruta, where he mentions as Nidra. Nidra, ज़्यादा सोना, गुरुत्वम, देह में, that is heaviness in the body, Vijrambhanam. Here it's not Jrimbhana, it's Vijrambhana, excess yawning. Vishlesha. Vishlesha is difficulty in moving the joints. Prakunchana and Prasarana. That extension and flexion of the joints is hampered. Vishlesha, Harsha. Harsha is Loma Harsha or Roma Harsha. Harshavata, Angamardha. Angamardha here is body ache. यहाँ पे पूर्व रूप हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है निद्रा, गुरुत्व। निद्रा ज़्यादा सोना, गुरुत्व भारीपन, शरीर का भारीपन, विश्लेष विजृंभणा, यहाँ पे जृंभणा नहीं बताया है, विजृंभणा बताया है, ज़्यादा क्या यॉनिंग जो बोलते हैं उसको करना। विजृंभणम च, विश्लेष, विश्लेष आपकी संधियों में जकड़न, आपकी संधियों का मोड़ना और खोलना, ये जो है इस प्रक्रिया का ना होना विश्लेष है। हर्ष, लोम हर्ष है जिसको हॉरिपुलेशंस भी बोलते हैं। और हर्षावथ, अंगमर्द, अंगमर्द शरीर में एक तरह का दर्द होना, विशेष तरह का दर्द होना, बॉडी एक, पेन जो भी है, उसे पूर्व रूप बताया गया है। नेक्स्ट हम जाएंगे लक्षण पे। लक्षण ये दूषी विषय का एक्चुअल स्वरूप ऑफ दूषी विषय हैज बीन
mentioned here. This is again here Charaka plays. Here Charaka Acharya comes into picture. He has not mentioned points regarding Dushi Visha elaborately. He has just concised it in 2 lines. He says Dushi Visham tu Shonita Dushtyaru Kitiba Kotha Lingam cha. And he tells it as Visham Ekaikam Dosham Sandushya Haratya Senashuhu Haratya Asunashuhu. That is, he has mentioned it. अब तक हमने जो भी रेफरेंस देखे हैं वो ज़्यादातर सुश्रुत और अष्टांग संग्रह और हृदय से हैं. अभी जब लक्षण जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे चरकाचार्य का रेफरेंस आता है. उन्होंने दूषी विषय का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है. ये एक श्लोका है जहाँ पे उन्होंने दूषी विषय का थोड़ा बहुत डेफिनेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ लक्षण. यहाँ पे कहते हैं दूषी विषम तो शोणित दुष्ट्यारुः. यहाँ पे रक्त दुष्टि के जो लक्षण, रक्त दुष्टि से जो भी लक्षण हमको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे. शोणित दुष्ट्यारुः. किटिभा कोठ लिंगम. किटिभा कोठ और आदि डर्मेटोलॉजिकल जो भी हैं, जो त्वचा से रिलेटेड कंडीशंस हैं, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे. विषमेकैकम दोषम संदूष्य हरत्यसेनाशु हैज बीन मेंशन. यहाँ पे एक एक दोष को जैसे दूषण करता है उसके रिलेटेड द दोषास विच गेट विशिएटेड एंड द करस्पॉन्डिंग धातुस द सिमिलर साइंस एंड सिम्टम्स विल बी मैनिफेस्टेड. Here Tikakaras has mentioned some of the points, like for Kotha, what is the description for Kotha? He mentions it as Varati Damsha Shothakaraha. Varativat, hives. यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन टीकाकारा ने भी दिया है. यहाँ पे वो कोठा के लिए एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि वरटिवत प्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे कि राउंड राउंड, जैसे आपको एक मच्छर काटने पर होते हैं हाइव्स, प्रोडक्शन ऑफ हाइव्स, सच मैनिफेस्टेशंस आर सीन. यहाँ पे जो भी बताया गया है वो ज़्यादा त्वचा से रिलेटेड है. Most of the signs and symptoms here mentioned are related to dermatology. Okay, dermatological manifestations are more here. Next, same thing. Continuing this. Sushruta, sorry for that, there was a small network issue. Sorry for that interruption. We shall continue. Until now we see sorry for that interruption again. I think we are back. Until now we saw dermatological manifestations, but further going to the systemic manifestations, it tells Tenardito Bhinna Purisha Varno. Tenardita, here the person suffering from Dushi Visha. Bhinna Purisha Varnaha. Bhinna Purisha. Bhinna is different. Purisha is fecal matter varna. The color of fecal matter is changed. Vigandha Vairasya. Vigandha, Gandha is changed. Vairasya, anorexia, loss of taste. Mukha Pipasi. There is more pipasa or thirst in the person. Murchan has giddiness. Vaman, excessive vomiting is seen in the person. Gadgadavak. Here for Gadgadavak he mentioned as Aspashtavak. The person is not clear while speaking. The voice is not clear while speaking. Bhavecha Dushyodara Linga Jushtam. Dushyodara Lakshanas are seen here. The same reference is again we can find it in. यहाँ पर हम
दूषी विषय के लक्षण डिस्कस कर रहे हैं। हम त्वचा से संबंधी जो लक्षण हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिस्टमिक जो संगठन में होता है, शरीर के अंदर होता है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। रेफरेंस है सुश्रुत कल्प दूसरे चैप्टर से। वहाँ पे बताते हैं कि ये जो दूषी विषय से अफेक्टेड जो भी व्यक्ति है उसमें उसके जो फीकल मैटर में जो कलर है वो चेंज होता है, विगंध रहता है, मुख में टेस्ट परसेप्शन कम हो जाता है, ज़्यादा तृष्णा रहता है, थर्स्ट रहता है, गिडीनेस चक्कर आना रहता है, ज़्यादा उल्टी रहता है, उसके जो वो बोलने की कोशिश कर रहा है उसका वाक्य स्पष्ट नहीं होता है, और जो दूष्योदर में जो लक्षण बताए गए हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। यही सेम रेफरेंस अष्टांग उत्तर संग्रह और अष्टांग हृदय में भी हमको देखने को मिलता है। पर वहाँ पे थोड़ा चेंज है श्लोका में। वो बताते हैं कि दुष्टास्त्र रोगी, यहाँ पे रक्त दुष्टि है जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। रक्त दुष्टि लक्षणास प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रक्त दुष्टि हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द रेफरेंस फ्रॉम अष्टांग संग्रह एज वेल एज हृदय. And the Tikakara for Ashtanga Sangraha or mainly Ashtanga Sangraha Tikakara, for that matter, Ashtanga Sangraha Tikakara has mentioned what is Bhinna Purisha Varna. Here he tells it as Purisha Varna Bhinna, it is change in color is there along with Ati Pravritti. There is more loose motion associated with change in color. Now, he also mentioned it as if the chronicity is too long, then the color will be Vyakta Shukla Rakta Adi Varna also is seen. If it is Samvatsara Sthena Dushi Vishena, it's more chronic, then the Vyakta Varna is Shukla or Rakta Adi Varna are seen in figure. This is the additional point along with Sushruta. And he also tells Dushyodara Lakshanas like Sannipatodara are seen here. Next, based on Ashaya, जहाँ पे ये दूषी विषय होता है, where this दूषी विषय resides, the similar signs and symptoms has been explained. They tell it as Amashayasthe Kaphavata Rogi. If it is in Amashaya, then diseases or lakshanas pertaining to kapha and vata are seen. If it is, अगर ये दूषी विषय आमाशय में है तो उस कफा और वाता रिलेटेड जो भी रोग है, लक्षण है, वो हमें देखने को मिलते हैं. पक्वाशय से अनिल पित्त रोगी, अगर ये पक्वाशय में है तो अनिल और पित्त रोग होते हैं, उसके लक्षण होते हैं. If it is in Pakvashaya, then Vataja and Pittaja Lakshanas or diseases are seen. Next, Bhaven Naro Dvasta Shiroruhango Viluna Pakshastu Yatha Vihanga. Here they mention a simile. एक उपमा दिया गया है इस कंडीशन के लिए, that is the person loses hair, as such a bird loses feather. जैसे एक पक्षी उसके पंख उसके निकल जाने से उसकी दुर्अवस्था हो जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति की अवस्था होती है. नेक्स्ट, कमिंग टू द धातुगत, ये सिस्टमिक, अंटिल नाउ इट इज सिस्टमिक. नाउ इफ इट इज इन धातुस, स्थितम रसादीश्वथवा यथोक्तान करोति धातु प्रभवान विकारान. जिस धातु में है उस धातु के प्रकुपित लक्षण को ये दिखाता है. द सेम रेफरेंस, यही सेम रेफरेंस हमको अष्टांग उत्तर तंत्र में भी देखने को मिलता है. अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी देखने को मिलता है. अभी यहाँ तक हमने देखा कि दूषी विषय किसको कहते हैं, कैसे ये विषय होता है, कैसे प्रकुपित होता है, कब ये अपने लक्षण दिखाता है, कब तक ये शांत रहता है देह में. अब लक्षण कैसे, कौन कौन से लक्षण इसमें दिखते हैं. नेक्स्ट, कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस.
अभी इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं हम वो देखेंगे। ततः अन्नमदाविपाकम, यहाँ पे अन्नमद बताया गया है। ये अन्नमद क्या है? टीकाकार इसको स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि अन्नमद वो है कि अन्न को खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड यू डोंट गेट कंटेंट, खाना खाने के बाद जो आपको खाना खाने के बाद जो तृप्ति होती है वो यहाँ पे नहीं होती है, दैट इज अन्नमद। अविपाक रहता है, अविपाक ऑल्सो देयर, द फूड डजंट गेट डाइजेस्टेड। अरोचक, फूड सेंसेशन, टेस्ट परसेप्शन इज रिड्यूस्ड और लॉस्ट, आप आहार को रुचि नहीं देख सकते हैं, टेस्ट परसेप्शन कम हो जाता है। और त्वचा रिलेटेड सिम्टम्स लाइक मंडला कोठ आर ऑल्सो सीन अलॉन्ग विद दिस, मंडला और कोठ भी होता है, और मोह, फेंटिंग सेंसेशन इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट धातु क्षय रहता है, द पर्सन रिड्यूसेस द फिजिकल कंपिटेंसी। पादकस्य शोफ, पाद और कर, हाथ में पैर में सूजन रहता है। दकोदर के लक्षण रहते हैं। छर्दी, वॉमिटिंग सेंसेशन इज देयर। अतिसार ऑल्सो इज देयर, लूज मोशन। वैवर्ण्य, देयर इज चेंज इन कॉम्प्लेक्शन, वर्ण में चेंजेस आता है। मूर्छा, गिडीनेस रहता है, चक्कर आने के सेंसेशंस रहते हैं। विषम ज्वर इज ऑल्सो देयर, विषम ज्वर भी होता है इसमें। कुर्या प्रवृद्धान प्रबलान विकारान, और प्रबल विकार भी ये, और मोर क्रॉनिक कंडीशंस आर ऑल्सो फॉर्म, और द लक्षणास आर मोर क्रॉनिक लक्षणास आर ऑल्सो सीन, लाइक उन्माद, उन्माद मन्येत जनेयेत तथान्य, आनाह मन्येत क्षपेत च शुक्रम। उन्माद इज सीन, आनाह इज सीन, and shukra kshaya is also seen. Gadadya manyet janet cha kushtham, kushtha is also seen. Stan vikaran bahu prakaran, based on the dosha vitiation and dusha vitiation, different presentations can be seen in this. If you see Sushruta Kalpasthana second chapter, he has chronologically explained the lakshanas. Initially he tells about tenarvito bhinna purisha varna. Next he mentions purva rupa as nidra gurutvam cha vijrumbhanam cha vishlesha harshavata angamardha. Next he mentions tatha karotsenya mathavipakam. If you see from the first shloka, the chronicity is increasing, and from systemic dermatological, again the chronic systemic manifestations are seen here. Next इसके प्रोग्नोसिस क्या है, ये साध्य है असाध्य है, इसको हम कैसे जानेंगे? द प्रोग्नोसिस साध्यम आत्मवतः सद्यो, ये साध्य कब होता है? व्हेन दिस बिकम्स साध्य, इट इज साध्य इफ इट इज ऑफ acute origin and if the rogi bala is and roga bala, it becomes sadhya. If it is more than a year, then it is yapya, that is difficult to treat. And even if it is more chronic, and along with that if the person practices mithya ahara vihara, apatya ahara vihara sevana is more, then it becomes asadhya. Next, coming to the chikitsa aspects, all the acharyas have specified chikitsa as sorry for that interruption again. So now we are coming to the chikitsa aspect of it. In chikitsa, most of the acharyas have mentioned shodhana as the prime chikitsa for dushivisha. Here dushivishartam susvinnam urdhvam chadhashcha shodhitam. Main is urdhva and adha shodhana have been mentioned as the prime chikitsa. After Swedana, susvinnam has been mentioned. Some of the acharyas, they opine it as snigdham. Here snigdham is not only snehana, it comprises also swedana here. Swedana, why swedana has been mentioned initially, at first is swedana
Here it removes the kapha avarana and brings the shakhashrita doshas to koshta, from where they can be easily eliminated. Hence Vedana has been mentioned. The same thing, all the acharyas opine the same thing, that is shodhana, urdhva adha shodhana, based on lakshanas and presentations should be done. Next, important yoga has been mentioned in the context of Dushi Visha, that is Dushi Vishari Agada. Dushi Vishari Agada has been mentioned in both Sushruta as well as Ashtanga, both Sangraha as well as Hridaya, but with slight modifications in drugs. Dushi Vishari Agada is said the prime medication to treat Dushi Visha condition. Please by heart this shloka, because this is most of the times asked. Also, the drugs would have been mentioned. It is asked in the entrance exam also, that drugs would have been mentioned and they would ask for this references from which samhita, whether Sushruta has mentioned this Dushi Visha or it is Ashtanga's Dushi Visha, like that. So please by heart the shloka. Pippalyo Dhyamaka Mamsi, this is a reference from Ashtanga Sangraha. The same thing is there in Ashtanga Hridaya, 35th chapter also. Pippalyo Dhyamakam Mamsi, Lodhra Mela Suvarchika, Kutannatam Natam Kushtam Ishti Chandana Gairikam, Dushi Vishari Namnayam, Nachanyatrapi Varyate. This is from Ashtanga Sangraha. Here, Pippali, two types of Pippali, Laghu and Brihat Pippali, Dhyamaka, Mamsi Jada Mamsi, Lodhra, Ela, Suvarchika, Suvarchika Lavana, Kutannata, Nata, Tagara, Kushtha, Yashti, Chandana and Gairika. All these drugs are taken. This combination has been mentioned. It can be used as vati, it can be used as kashaya, it can be used as churna itself. Based on the palatability, you can change the form of the drug. Shruta has changed some of the drugs in this. Pippalyo Dhyamakam Mamsi Shavaraha. Here Shavaraha is again Lodhra, same thing. Shavaraha Paripelavam. Paripelavam, he mentions it as Vanyaka or Kaivarta Mustaka as a drug. Suvarchika, same thing, Suvarchika Lavana. Sukshmela, Toyam, he has mentioned Toya as Balaka. Toyam Kanaka Gairikam. Kanaka Gairika is Swarna Gairika. This is the Dushi Vishari. Nachanyatrapi Varyate it is the prime medicine for treating Dushi Visha. Here for Snehapana Panchatiktadi Ghratas can be used, and other Agada yogas based on the presentations can be added and utilized. Now we are coming to the end of the session. Is there any doubts regarding the topic? If there is none, then we'll wind up the session. What point you require regarding repetition on what point, on which shloka? Thank you, Surindarji. Akshji has mentioned is requesting repetition of shloka. I didn't get which shloka. Hopefully in the next session we'll have some clinical, the last one is the references regarding Dushi Vishari Agada. This is a
unique Agada mentioned specially for treating Dushi Visha. That is Pippalyom. This is the references. I'll give you the reference. That is Sushruta Kalpa 2nd chapter and Ashtanga Sangraha Uttaratantra 40th chapter. You will get this. And also Ashtanga Hridaya 35th chapter. You will get reference for this yoga. It is an formulation. That is Pippalyom, Dhyamakam, Mansi, Ashtanga Hridaya. Yes, 35th chapter. Yes. Yes, Shloka of Yoga. Please by heart this. This is very important, and it's very helpful in clinical practice, especially regarding, especially in the context of Dushi Visha. Is there any doubt regarding the topic? If not, we'll wind up the session here, and in next session I'll try to get the clinical presentations on Dushi Visha and how it was treated. Most of the cases were treated on OPD basis, so we'll try to get, I'll try to get those cases, and hopefully you'll see the clinical presentation of Dushi Visha.